बस इतना नोट करना है कि ये ऐसे काम करता है। जैसे अगर फैन की बात करें तो पंखा घूमता है, ब्लेड ऐसे होता है तो हवा को काटता है, और बस ज्यादा कुछ नहीं। So this one of the equipment is Bnwas, Bridge Navigation Watch Alarm System. So now we are starting that, and I am now inviting attention of everybody in the class, all the complete batches, February batch, March batch, and April batch, all to be in the class. Are we all okay? Yes, sir. Okay. Somebody respond from the February batch. Are we all good? Yes, sir. कौन सा बोले? नहीं सुनाई पड़ा. Yes, sir. Yes, sir. All good, sir. Okay. All right. So Bnwas. Basically, Bnwas is the deadman alarm of the bridge. You have heard the deadman alarm, term deadman alarm used for Bnwas also. Bnwas को भी deadman alarm बोलते हैं, but popularly जहाज में deadman alarm is a different device. Bridge navigation watch alarm is a different device. Can somebody identify the two? What is a deadman alarm? Engine Yes, room sir. deadman alarm, sir. Very good. Engine room में ये alarm engine room में लगा होता है. Is that correct? Yes, sir. Deadman. Okay, I don't agree. Alarm bridge में लगा होता है. पंप रूम में भी होता है सर. सिस्टम लगा होता है यूनिट होता पंप रूम. हाँ. सिस्टम लगा होता है पंप रूम इंजन रूम में, बट अलार्म बजती है ब्रिज में. सो जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. यूएमएस क्लास शिप के लिए होता है ये. दिन में तो नॉर्मल वॉच कीपिंग चलती है इंजीनियर्स की, बट ड्यूरिंग द नाइट द इंजन रूम इज अनमैन्ड. तो अनमैन्ड शिप में भी, सॉरी द इंजन रूम के अनमैन्ड में भी राउंड्स के लिए जाना पड़ता है टू टेक ए लुक कि सब सिस्टम काम कर रहे हैं सही या नहीं. सो राउंड के लिए जाते हैं. व्हेनेवर दे एंटर, they switch on the system. The deadman alarm system is switched on. And when, as long as they are inside, they are also informing the bridge that we are entering, and they switch on the system from the entrance part only. And as long as they are inside the engine room, they have to keep pressing a button which may be located at different places. Maybe in the workshop, in the control room, near the steering flat, this place, that place. हर जगह पे reset buttons दी होती. So the engineer on watch who has gone inside must press this reset button in order to bring the system back to 00. अगर वो ये काम करता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है. द ऑफिसर ऑन वॉच इज इंजीनियर ऑन वॉच इज अलर्ट, ही इज रीसेटिंग, तो सब ठीक है, बाकी सब भी काम कर रहा है. बट अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, इंजन रूम इज अ हजार्डस प्लेस, लॉट मेनी थिंग्स कैन हैपन. सो इफ ही इज नॉक्ड अनकॉन्शियस, गिर गया, कुछ हो गया, झटका लग गया, तो रीसेट तो नहीं कर पाएगा. इन दैट केस the alarm is sounded off in the bridge. The watchkeeping officer gets alerted that nobody is responding in the bridge, so something has to be done about it. So he will make the call to the master, to the chief engineer and the rest कि भाई जाकर के देखिए कुछ हो गया है, they are not responding. So this is the deadman alarm of the engine room. Anything going wrong in the engine room, officer on watch is alerted. The chief cook got locked inside the freezer. You are well aware कि engine room, freezer में भी एक अलार्म होता है, freezer अलार्म होता है. Chief cook को भी पता होता है. So when he is getting locked and unable to open the door from inside, what he does, he sounds the alarm. ये अलार्म कहाँ बजता है? Bridge पे. Bridge पे. Bridge.
कहीं पे आग लग गई, there is a fire somewhere, the fire is detected by the sensor, alarm is sounded. Where is the alarm coming? Bridge and engine control. Again, bridge, important place. हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, he needs some help, he presses the hospital alarm. Where is the bell sounding? Bridge. So bridge is basically the command center of the ship, and the officer on watch is an acting master. The master is not there in the bridge. During that time, the officer on watch, maybe it is third mate, second mate, chief mate, whoever is on the duty, is acting master. It is his responsibility to take care or responsible for the safety of the ship, safety of the cargo, safety of the environment, safety of life of the people. It is the responsibility of the officer on watch. कुछ भी होता है तो first the bridge is informed. So much so that even the chief officer who is making an entry to enclosed space, वो भी पहले बता देता है ब्रिज में, वहां थर्ड मेट होगा, but the chief officer reports to the bridge, not to third mate. He is reporting to the bridge. The bridge should have all information ready all the time. So officer on watch is a very important person. He is going to take care of the safety of the ship. He is responsible for the safety of cargo. He is responsible for the safety of personnel. He is responsible for the environment कि कुछ pollution ना कर दो, कुछ बाहर में फेंक ना दें, तो he keeps watch on all that. इतना important आदमी which all of you have been, अगर इनको कुछ हो गया तो, अगर कमांड सेंटर में जो वॉरियर है, अगर उसी को कुछ हो गया, उसी को तबीयत खराब हो गई तो उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको एपिलेप्सी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, और इफ नथिंग ही जस्ट डोज्ड ऑफ, लास्ट नाइट वाज वेरी हेक्टिक, तो बैठे बैठे सो गया, उस केस में तो ना ही इज गोइंग टू लिसन टू द अलार्म्स एंड नॉट गोइंग टू डू द नेविगेशन. द शिप में रन अग्राउंड, इट में कोलाइड, कुछ भी हो सकता है. दिस इज द सिचुएशन व्हिच हैड बीन फेस्ड इन द पास्ट. ये सब सिचुएशंस हुए थे, और इसी के लिए 2006 में this was mandated that the ships will be installed with an alarm system for the navigator. So anywhere in the ship something was happening, the information was given to the bridge was notified. Now this Bnwas is doing the same thing but in the reverse way. So it is an electronic device basically. इधर आ पहले. Monish saying something? Okay. So if something goes wrong, the Bnwas will alert the backup officer or the master by means of a series of alarms and indications. So it is the deadman alarm of the bridge. The functionality is similar, but the way it is functioning थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा process अलग है, but काम वही है. It is alerting the backup officer or master if there is some problem in the bridge. So one liner, what is Bnwas and what is its purpose? Same one question, single line ka question. The statement for this question should be that Bnwas is an electronic device fitted in the bridge which monitors the bridge activity and checks the awareness of the officer on watch
in case it detects the officer's inability to carry out his normal navigation watch duties, then it will alert the backup officer and master by means of a series of alarms and indications. तो यहाँ पे बनवास में the alarm is raised but in a sequential manner. क्या मतलब? तो पहले एक अलर्ट होएगा, फिर दूसरा अलर्ट होएगा, ये नहीं तो तीसरा अलर्ट होगा. मल्टीपल चांसेस दिए जाते हैं ऑफिसर ऑन वॉच को टू रिसेट द सिस्टम, ताकि कोई परेशान नहीं. लेकिन इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो ही विल नॉट, अगर अनकॉन्शियस है मान लीजिए या सोया हुआ एकदम डीप, तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ अलर्ट्स. सो अगर फेल होता है then the alerting will be done, sent to the backup officer and master. So now we are going to talk about this. We'll take a look at the diagram, what are the components of the system and how it functions. So now you'll be seeing, I'm sharing the screen, and on your screen you will see the PPT slide. उसी में हम इसके बारे में बात करेंगे. So just a minute, let me share the screen. Just one second. Okay, is my screen visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. We can see. Yes, sir. Okay. So this is what Bnwas we are talking about. So few slides of what we have been talking about. The Bnwas monitors bridge activity. That means there is some activity happening in the bridge. अगर ब्रिज एक्टिव है तो सब कुछ ठीक रहेगा. ऑफिसर ऑन वॉच अगर इनएक्टिव हो गया तो इट कैन लीड टू marine accidents and all that. So in order to avoid that, this bridge alarm system has been installed. So it is monitoring the bridge activity. It checks out the awareness of the officer on watch, that he is alert or not. And if it detects the officer's inability to perform his navigational duties, if he detects, the system detects that officer is not able to do his duties, he is not aware, he is not alert, then it will alert the master and backup officer by means of a series of alarms and indications. घंटी सीधा एक बार में नहीं बज जाती. It happens in small stages. एक पहले ये, पहले वो, फिर उसके बाद वो, उसके बाद. So we'll be seeing that sequence of alarms also. So Bnwas is for alerting in case of emergency, but additionally the Bnwas also has a feature as required by the IMO. ये IMO की requirement है कि Bnwas should have this feature. तो उसमें एक हॉट की होती है. इमरजेंसी कॉलिंग फैसिलिटी के लिए एक हॉट की होता है, कोई सिस्टम होता है जिससे अगर उसको प्रेस करेंगे तो अलार्म विल बी डायरेक्टली रेज्ड इन द कैबिन्स ऑफ द मास्टर और बैकअप ऑफिसर. दैट मीन्स नॉट ओनली व्हेन द ऑफिसर ऑन वॉच इज इनएक्टिव तब अलार्म जाती है, बट द ऑफिसर ऑन वॉच इज एक्टिव एक्चुअली and very prompt, probably at that, and he wants to call the master on the bridge. So of course he can make a phone call, but apart from that there is a parallel system available in the Bnwas.
there is a switch provided for emergency calling. So the Bnwas also has emergency calling facility. Here is this components of the Bnwas system. Okay, जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी. So first one is the डब्बा. रेड मार्किंग के साथ आप देख रहे हो. This is the main CPU of the system. Basically CPU का central processing unit. इसी में electronics है सारा, motherboard है, सारे functionality इसी में है. You can also see that there is a blue screen. वहां पे कुछ settings वगैरह display होगी, time display होता रहेगा. हालांकि डिस्प्ले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है IMO से, बट ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, सो दैट उनका प्रोडक्ट बिक पाए. पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस प्रोडक्ट्स. सो दिस इज बेसिकली अ वेरी सिंपल CPU, अ क्लॉक टाइमर. इसमें टाइम काउंट करने का फीचर होता है, प्लस कुछ ठीक है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह है. So first one is the main dabba, the CPU. Apart from that, there are multiple reset points, the yellow color ones. You are already aware it is there installed in the bridge at various locations. Why it is placed in various locations? There is a special requirement by the IMO that the reset point should be easily accessible. ऐसा नहीं कि पोर्ट में लगा हुआ पोर्ट साइड में और ब्रिज विंग में है स्टारबोर्ड साइड में, तो वहां से दौड़ के जाएगा पोर्ट साइड में प्रेस करेगा बटन. नो, इट शुड बी अवेलेबल एट क्लोज हैंड ऑल द टाइम, and only one way it can be ensured that there are many points like that. That is why so many of the reset points. यहाँ 6 दिख रहा है, ये 6 का 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है अगर बड़ा ब्रिज है तो. ये छोटा ब्रिज है तो 4 भी हो सकता है. Idea is that the whole bridge is covered with access of this reset points. Apart from that, there are 2 of them also available in the bridge wing. Bridge wing reset switch is housed in a box which is weatherproof, waterproof, because it has to be remaining outside. तो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है. Function is the same. Then there are alarms. These are cabin alarms. These are installed inside the cabins. अभी हमने बात किया था कि alerting is done to the master and the backup officer. So सभी के कमरे में लगा होना चाहिए and it can be selected कि अभी जो वॉच पे आदमी है, ऑफिसर ऑन वॉच, इसका बैकअप ऑफिसर कौन है. तो नॉर्मली जैसे वॉच कीपिंग होती है, थर्ड मेट का बैकअप सेकंड मेट का बैकअप चीफ मेट, और एज इट इज डिसाइडेड बाय द मास्टर. So these are cabin alarms. When we are alerting those people, they should rush to the bridge. The master should rush to the bridge. The backup officer should rush to the bridge and control the situation, take care of the situation, जो भी हो रहा है. But if they are also failing, तो उसके लिए एक और सिस्टम है, which is the general alarm or alleyway alarm, Bnwas alleyway alarm. This is placed in the alleyways so that it is not located localized to one cabin, but it is heard by anybody, and now anybody can rush to the bridge. जिसको भी सुनाई पड़ा, he can rush to the bridge and do whatever way he can support in controlling the situation. हो सकता है कि सेकंड इंजीनियर भी दौड़ के पहुंच जाए ब्रिज पे, हो सकता है कि दूसरे बैकअप ऑफिसर भी पहुंच जाए, दूसरे नेविगेटिंग ऑफिसर्स भी पहुंच जाए. So these are the components of the system. So how does it function? The functioning of Bnwas
जो series of alarms indications हमने बात किया, that can be well explained by a diagram. Whatever we are going to see in diagram is what is written in slides also. So we will directly jump to the diagram. As you can see, there is stage 1 alarm, then there is stage 2 alarm, there is third stage alarm also. So these are sequence of alarm. पहले stage पे जाता है, दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है. So here is the Bnwas. इसमें सारी settings कर दी गई हैं. Who is the backup officer for whom? कितने देर के भीतर में रिसेट करना है? जो 15 मिनट था डेडमैन अलार्म के केस में इंजन रूम में. Here it is anything between 3 to 12 minutes. So the system is when switched on. जब Bnwas को हमने स्विच ऑन किया या रिसेट किया किसी ने by pressing the button. So whenever it is switched on or when it is reset by pressing those reset buttons, the yellow ones, the Bnwas is beginning to count time. कुछ नहीं करता है, चुपचाप भीतर में टाइम काउंट करता रहता है. It is dormant for that period. It will take no action during that time, and that is why we are calling it dormant. The word dormant is inactive. सोया हुआ. So सोया हुआ वैसे तो नहीं है, but it is doing nothing. Only it is counting time. The time can range from 3 to 12 minutes, which is set by the master. There are settings provided, methods of settings provided. It can be chosen between 3 and 12 minutes. 3 मिनट से कम नहीं हो सकता, 12 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता. 3 मिनट से कम होएगा तो फिर तो ऑफिसर ऑन वॉच वहीं स्विच पकड़ के खड़ा रहेगा वहीं पे. So not less than 3 minutes, not more than 12 minutes, as decided by the master, as set by the master. The officer on watch should press the reset button between this time. कहीं पे भी 2 मिनट में हो, 4 मिनट में हो, 6 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, 12 मिनट में हो, इस बीच में the reset button should be pressed. If it is reset, then of course it goes back to 000 here. अगर reset कर दिया तो फिर से काउंटिंग शुरू हो जाती है, टाइम डेटम पे चला जाता है और वहां से शुरू हो जाती है. बट इफ नॉट रीसेट विद इन डॉर्मेंट पीरियड, इफ द सिस्टम इज नॉट रीसेट, देन देयर इज फर्स्ट विजुअल अलार्म फॉर 15 seconds. A visual alarm is starting. No sound, only flashing light. There in the reset points itself, वो जो बटन था रिसेट करने के लिए जो जिसे हम प्रेस करते थे, that also has an LED or bulb inside which begins to flash. If officer's watch was mind was diverted, he will see this flicker and he will remember to reset the system. But if he is sleeping, तब तो नहीं कर पाएगा. He is not going to see this. Or if he is unconscious, then he is not going to see this. So this flashing light gives the officer on watch a time duration of 15 seconds. इस 15 सेकंड में रीसेट कर देना चाहिए. अगर रीसेट कर दिया, if it is reset, then everything goes back to 00 once again and the process begins
once again. But since the officer on watch was sleeping, so he did not see the visual alarm. So after the visual alarm started, after 15 seconds, there will be audio alarm. If it is still not reset, then there will be audio alarm. First please alarm. Yes? Somebody is trying to say something? Somebody is trying to say something? Microphone on है. किसी का माइक्रोफोन ऑन है, म्यूट कर लीजिए प्लीज. Okay. So the first stage alarm. This first stage alarm is in the bridge only. The first stage alarm. Remember one thing very clearly, that up to this it is all normal operation. Switching on, reset, dormant period 3 to 12 minute, flashing light शुरू हो गई, reset कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, सब ठीक है. सो नॉर्मल ऑपरेशन है यहां तक. जो हम स्टेजेस की बात करते हैं अलार्म की, तो वो शुरू होता है स्टेज अलार्म. यहाँ पे स्टेज अलार्म फर्स्ट व्हेन द ऑडियो बजर इज साउंडेड. In fact, this stage 1 alarm also is okay. Nothing is lost, nothing has gone wrong if the system is reset by hearing this first stage alarm. That is why you can see that it is buzzer. Buzzer क्या होता है? हल्का सा साउंड आता है. There is a small beep 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 sound just to attract the attention. So first attempt was to attract the eyes of the officer on watch, लेकिन आंखें बंद थी. So it is trying to attract the ear of the officer on watch कि भाई देख नहीं रहे तो सुन तो लो. मान लो officer is working on the chart, he is उसका सिर नीचे, उसने नहीं देखा. Then there is this audio alarm, which is the first stage alarm. Till now, the system has not gone out of the bridge. Everything is within the bridge up to this, no problem. If the system is reset, then it goes back to 00 once again, and the cycle starts again. तो जैसे बोलते हैं अभी घर की बात घर ही में है, ब्रिज की बात ब्रिज ही में है. स्टेज अलार्म स्टेज 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. But if he did not take into account the dormant period, visual indication से उसको हम नहीं जगा पाए, उसको ऑडियो बजर से भी नहीं जगा पाए, and still he is not resetting. If the system is still not reset, then there will be second stage alarm. Now the things have gone out of hand, rather out of bridge. So the second stage alarm is sounding in the cabins of the officer on backup officer and master. Second stage alarm are cabin alarms for the master and the other backup officers. Now this is the black one, thoda bada wala. Here you see it is not written buzzer, it is proper alarm. It is loud alarm. Why loud? Because it is sounding in the cabin, and cabin में हो सकता है सोया होगा लोग, तो सोए आदमी को जगाना है. So the second stage alarm is a loud alarm which is sounded in the bridge, sounded in the cabins. It is loud enough to
awaken a sleeping person. Now, this cabin alarm will keep on going for 90 seconds. Second stage alarm continues for 90 seconds. Why 90 seconds? Because they have to rush to the bridge. They will be in the cabins, so they will just rush to the bridge. They might take a little bit longer. So time is given to the master and backup officer of 90 seconds. Within this, they should immediately rush to the bridge and take control of the situation. हो सकता है officer on watch has had a heart attack, he is dead, or maybe it is just that due to fatigue he is sleeping, or he slipped, knocked his head on the bulkhead on the floor, and then he's unconscious. कुछ भी हो सकता है. So this backup officer and master will rush to the bridge and take care of the situation. But before they do it, they should reset. They should reset the system. फिर से अगर reset करेंगे, when it is reset, then the system again goes back to 00. सारा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है. उसमें ये फ्लैशिंग लाइट है वो भी बंद हो गई. फर्स्ट स्टेज अलार्म जो बजर बज रहा था वो भी बंद हो गया. सब बंद हो गया. रीसेट करने से सारे अलार्म्स एंड इंडिकेशंस बंद हो जाते हैं. और जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे कि सेकंड स्टेज अलार्म कैबिन में बज रही थी, तो सेकंड स्टेज अलार्म के साथ साथ वो फर्स्ट स्टेज अलार्म भी बज रहा था ब्रिज में. सारे लाइट्स फ्लैश कर रहे थे, वो भी चल ही रहा था. बट रीसेट अगर करेंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे. ये ब्रिज के भी, कैबिन्स के भी सारे अलार्म्स बंद हो जाएंगे. एंड द सिस्टम विल कम टू डेटम 00 पे, and the new cycle of dormant period will start. Now, as you can, from common sense, you can understand and think that the reason for second stage alarm is that somebody was not working properly in the bridge. Is that correct? Officer on watch was unable to perform his duties in the bridge, and that is why the second stage alarm came. So, should this event be recorded or not? कि ऐसा कुछ हुआ था activity on this officer on watch, उनके watchkeeping में he was found sleeping. Should it be recorded or not? Yes. So, a VDR link is also provided. जैसे ये second stage alarm बजता है, एक VDR को भी इनपुट चली जाती है. VDR रिकॉर्ड कर लेता है डे टाइम के साथ कि सेकेंड स्टेज अलार्म वाज साउंडेड एट सो एंड सो टाइम फ्रॉम बनवास. So VDR link is given to the VDR link is provided to the VDR, and the VDR will record in its memory that at so and so date and time Bnwas alarm was sounded. Now there are 90 seconds available to the master and the backup officer to rush to the bridge. Within this 90 seconds, they should come to the bridge, reset the Bnwas, and then start acting for controlling the situation. But if they were also sleeping hard, that they did not reach the bridge within 90 seconds, या बैकअप ऑफिसर नहीं पहुंच पाया, then there is a third stage alarm. This third stage alarm, हाँ जी बोलिए सर. ये पूछना था कि जैसे ये जो वीडीआर का लिंक जो जाएगा बनवास के थ्रू, ये आप जब स्टेज 2 का अलार्म रीसेट नहीं होगा देन इट विल रिकॉर्ड, और इमीडिएटली द मोमेंट इट रीचेस द सेकंड स्टेज तब रिकॉर्ड होगा? इमीडिएटली, क्योंकि सेकंड स्टेज होने का रीजन ही यही है कि देयर वाज अ ब्रीच ऑफ वॉच कीपिंग. इज दैट करेक्ट और नॉट? यस इट इज.
तो इमीडिएटली जैसे ही सेकंड स्टेज अलार्म बजना शुरू होता है, कैबिन में अलार्म बजना शुरू हुआ, उधर रिकॉर्डिंग हो गई कि इतने बजे बजनी शुरू हुई थी। सर एक नॉट क्वेश्चन दैट और है इट फिनिश। हाँ बोलिए। सर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स एज पर 16 से हैं या फिर ये उसके हिसाब से है, मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट है? Negative. These are the requirements. Anything that we are going to study here in the functioning of a device, it is all IMO requirement. These are the requirements of IMO that we are studying right now, and all manufacturers will perform this or give this functionality either this way or that way, but they should fulfill this requirement. If not, then their instruments will not be approved to be fitted on the bridge. So this is IMO requirement that Bnwas, उसका पर्पस जो आपने शुरुआत में देखा था, मॉनिटर ब्रिज एक्टिविटी, alert the backup officer by sequential alarms and indication, is all coming from the IMO 16 requirement. सर ये बस जो ऑडियो अलार्म फॉर 90 सेकंड इन मास्टर्स और बैकअप ऑफिसर कैबिन लिखा है, जरूरी नहीं है ना सर मास्टर कैबिन में होगा, बैकअप ऑफिसर में ही बच सकता है ना सर? उसके बारे में आएंगे, दैट पॉइंट विल बी क्लियर लेटर ऑन। अभी तक बेसिक रिक्वायरमेंट में ये है कि बैकअप ऑफिसर और मास्टर के कैबिन में होना चाहिए, बट देयर इज अ बाईपास ऑल्सो। ये सर बिकॉज बैकअप ऑफिसर में बचता है सर, मास्टर कैबिन में नहीं बचता। जनरल अलार्म के टाइम पे मास्टर को पता चल जाता। एग्जैक्टली, तो ऐसा पॉसिबल है। तो हम बैकअप ऑफिसर एंड और मास्टर बोल रहे हैं। सम शिप्स मास्टर इज ऑलवेज इन्फॉर्म्ड, तो उनके कैबिन में बच सकता है। तो सेकंड स्टेज अलार्म के लिए और का फंक्शन है, बैकअप ऑफिसर और मास्टर। इट इज नॉट नेसेसरली दैट एंड मास्टर। सो अगर दोनों के कैबिन में बच गया तो भी फुलफिल हो रही रिक्वायरमेंट कि बैकअप ऑफिसर को जा रहा है। अगर सिर्फ बैकअप ऑफिसर को जा रहा है तो भी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई कि हाँ, बैकअप ऑफिसर इज गेटिंग अलर्टेड इन द कैबिन। बहुत बार ये होता है कि कैबिन में होता ही नहीं अलार्म, दैट इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय IMO, in which case in a given situation, in a given type of ship, there may not be second stage alarm. आगे आएगा। So seeing the diagram on the screen, the flow diagram, can you tell me what was the reason third stage alarm is sounding? किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया सर सेकंड स्टेज अलार्म। Within 90 seconds nobody responded, correct? Yes, sir. And that is the Yes, backup officer. That means बैकअप ऑफिसर को जो ड्यूटी है उसमें वो भी फेल हो गया, 90 सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया वो। So should this be recorded or not? लॉगबुक एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. So that is exactly what is happening. A VDR link is also provided. The moment third stage alarm sounds, which is in the alleyway, in common areas, anybody can hear, anybody can rush to the bridge. It may be chief engineer also, it may be third engineer also. ब्रिज में पहुंच करके फिर फोन घुमाएगा, इधर उधर करेगा। अगर कुछ आइडिया है रिसेट का तो रिसेट करेगा, और नहीं तो किसी को कैबिन में जाके बुला के लेके आएगा। whatever he has to do, he will do. But mostly the job is related to navigation. So navigating officers की हम बात कर रहे हैं। Now this general alarm, alleyway alarm will keep on sounding till the time the system is reset. जब तक कोई पहुंच नहीं जाता ब्रिज में, जब तक कोई रिसेट नहीं करता, तब तक ये बजता रहेगा। So this is the alarm sequence of the Bnwas. The same thing as we have seen on the diagram, in the diagram here, flow diagram, is what is written in the previous slides. You can read those slides and confirm yourself that we are reading the same thing. जो अभी हमने पढ़ा उसी को रिपीट कर रहे हैं टेक्स्ट में।
So from the point of view of examination, अगर ये alarm sequence पूछते हैं, so it will be good idea to make the flow diagram because that describes the function very nicely. It will help if you make the flow diagram. Otherwise, you can सर write. लिखना भी है फ्लो डायग्राम के बाद लिखना जरूरी तो नहीं सर, उसमें समझ ही आ जाएगा कि लिखना भी पड़ेगा। आ तो जाएगा, एक एक लाइन लिख देंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि फ्लो डायग्राम भी अगर करते हैं तो डिस्क्राइब तो करते हैं ना कि क्या हो रहा है। तो मे बी 2 minutes more it will take, but it will be very descriptive and it will attract more points, मतलब ज्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनाता है। So what happens after switching on or resetting it? Dormant period of 3 to 12 minutes. Visual alarm after the end of dormant period. अगर नहीं reset किया तो visual indication is flashing light in the reset points. If not reset, then first stage alarm, which is a buzzer, low volume buzzer. It should not be loud enough in the bridge. ऐसा नहीं कि ऑफिसर ऑन वॉच हिल जाए पूरा भीतर से, अरे बाप रे ये क्या हो गया। कैरेक्टरिस्टिक साउंड जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन कि भाई टाइम हो गया, पीप 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 पीप। सो जो टर्मिनल बोर्ड है वहां पे भी हो सकता है, रीसेट पॉइंट्स के साथ में भी है, उन सब के साथ भी लगा हो सकता है, या एक दो कॉमन पॉइंट पे लगे हो सकते हैं, ये बस। This will continue for 15 seconds. If reset, system goes back to 00. If not, then it goes to second stage alert. Now you are well aware what is second stage alert. In the cabins, loud alarm. Backup officer should rush to the bridge within 90 seconds. This second stage alarm is on for 90 seconds. Backup officer should reset the system, then take control of the situation, then call master, whatever has to be done. If he also fails, if he is unable to reach the bridge in 90 seconds and reset the system, then it goes to third stage alarm, which is in common area. Now we are calling it general alarm, but this is a different general alarm than the ship's general alarm. शिप का जनरल अलार्म इमरजेंसी अलार्म नहीं है ये, नहीं तो सब लोग सुनेंगे इसको और भाग लेंगे मास्टर स्टेशन पे। So there is a difference. It should be clearly identified that this is Bnwas general alarm and people should run to the bridge, not to the deck at the muster point. सर तो ये तो फिर पीए के अनाउंसमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जनरल अलार्म तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सर। पीए पे अनाउंसमेंट तो साथ में होती है, जब ऑफिसर ऑन वॉच वहां से एक्टिवेट करेगा जनरल अलार्म तो पीए पे अनाउंसमेंट होती है, वेरी गुड। बट ऐसे भी अगर पीए पे अनाउंसमेंट नहीं हो तो भी वी आर ट्रेन्ड टू रश टू द मस्टर पॉइंट हियरिंग जनरल इमरजेंसी अलार्म। हाँ सर, वही कहना था, क्योंकि बिकॉज जब लास्ट जो फर्स्ट स्टेज का अलार्म बजेगा और इट विल बी अ जनरल इमरजेंसी अलार्म, तो टू डिफरेंशिएट तो अलार्म के थ्रू आई डोंट थिंक, मतलब क्योंकि मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई डिफरेंट अलार्म हो बनवास के रेस्पेक्ट में और नॉर्मल जनरल इमरजेंसी। So I think somebody has to All right, there has some kind of differentiation to identify the Bnwas alarm and the general alarm, general emergency alarm. हाँ जी सर। Some method has to be there to differentiate it so that all the people do not rush to the muster. So that is alarm stage 3. Alarm stage 1 and 2 is recorded by the VDR because the VDR is supposed to receive all mandatory alarms. जहाज पे जितने मैंडेटरी अलार्म्स होते हैं उन सब की फीड जाती है वीडीआर को, जो हम वीडीआर में और भी पढ़ेंगे बाद में।
So whether it is freezer alarm or deadman alarm or hospital alarm or fire alarm or general emergency alarm, whatever emergency, whatever mandatory alarms are there, all are recorded by VDR, and Bnwas is a mandatory fitment. So Bnwas alarm also becomes mandatory alarm, and it should also be recorded by the VDR. So this is what we have seen. सर एक क्वेश्चन था सर. बोलिए. सर ये जो बनवास में और बाकी से इक्विपमेंट्स के भी अलार्म इनकॉर्पोरेटेड होना मैंडेटरी है कि मतलब ये टाइप टू टाइप वेरी करता है सर? I did not understand your question. Bnwas में Yes, I'll explain you, sir. Like the equipment which I had a JRC Bnwas in my last ship. So it also triggered an alarm. Suppose there was a malfunction in radar. Suppose there was a malfunction in AIS. It also had a Bnwas alarm. So is it a mandatory sequence as per negative? IMO? It is not mandatory. It is not mandatory. Okay. IMO says ECDIS, if there is a malfunction, there has to be a malfunction alarm in the ECDIS. Yes. IMO says if the radar is failing, there is a malfunction, it should give alarm. IMO says if GPS has got a problem, it has got malfunction, then it should give alarm. Okay. IMO says echo sounder, if there is a problem, it should give malfunction alarm. So each individual equipment is supposed to be having its own alarm. So in that case, Now it was GRC, as we said, that people try to make their instrument more attractive so that they can find more buyers for it. Yes. So So this I is an also had the same JRC, but the individual alarm will be there, sir. After individual alarm, then alarm will come same on the JRC. This Bnwas also, sir. Yes, of course. For each equipment, sir. Yeah. not For each equipment, it is coming. Yeah. it is ये not IMO mandatory रिक्वायरमेंट नहीं है. alarm होना चाहिए. It is not mandatory that दूसरे navigation equipment के alarm बनवास के थ्रू बजने चाहिए, बट बज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. ये फीचर एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने JRC ने. And, sir, It is added thing. when you were explaining, sir, ये alarm stage 1 पे जब buzzer बज जाएगा ना सर, उस बनवास में क्या था कि सर आप normal reset नहीं होता था सर वो. You have to go to the silent mode and then उसके बाद आपको प्रेस करना पड़ता था. जो मेन पैनल है ना सर बनवास का, उससे रीसेट होता था वो. फिर वो जो इंडिविजुअल बटन्स और बजर स्टॉप्स हैं उससे नहीं होगा सर वो रीसेट. Okay, so that is all right. This is a safety feature provided. Reset points, as you are saying, it can very well be possible, but IMO does not specify कि it has to be reset from. अगर buzzer बज गया तो reset has to happen from the panel itself or from other. ये कहीं पे specified नहीं है. It is just that reset point should be activated if you want to reset the system. ठीक है. तो बनवास के रिक्वायरमेंट में it is not mentioned that the once the alarms are activated, the reset should happen only from the panel. That is not a requirement. All right. Whenever the ship is underway, detail में बात कर लिया हमने. Modes of operation detail में बात कर लिया. Just read through this. The 3 modes of operation that should be given in available in Bnwas. What happens in automatic operation mode? Automatic mode, manual on. I am going few slides back where we had this dabba
of the Bnwas, just to show you this. You have already seen quite senior people, so you have fair idea of what we are talking about. But as you can see, there is a keyhole. This keyhole is basically a switch which can be operated by turning it left and right. As you can see here, this side is written on off. On the top there it is written auto, and this side it is written standby. तो standby का function होगा कुछ particular manufacturer का, but this on off or auto mode can be selected by the switch itself, and this can be operated only by the key. That means it is secured. No key, no change in the mode of operation. This basically brings in another feature which is required, that is security of the system. The operation of the Bnwas should be secured by means of either the switch key or by password. These two or one of these two will remain with the master or the authorized person. Only he can operate. So another operational requirement is security of the system. The system's operation is protected by means of a key or by password. It cannot be manipulated, cannot be operated by anybody just like that, unless they have one of these. तो पूरा सीक्वेंस जाएगा ये. Anyway, so modes of operation हो गया. Power supply, normally ship's main supply. When power failure, battery backup, 6 hours of operation. Emergency calling facility that we discussed. The system will jump to second stage by passing all the remaining part of the dormant period. The visual alarm, the audio alarm in the bridge, सबको bypass करता हुआ it will go to second stage alarm. I hope it is clear, but just to explain this, आपने यहाँ पे reset किया था system को. अभी यहाँ से निकल करके मान लीजिए 4.5 मिनट्स हुआ है और यहाँ पे इमरजेंसी कॉल बटन दबा दिया गया. So it will bypass all this time of dormant period. यहाँ से यहाँ dormant period था, it will bypass. 15 seconds का visual indication will be bypassed. Then 15 seconds of bridge alarm will be passed, and the system will directly jump and go to second stage alarm. So बीच का सारा जो है that will be bypassed, and after 90 seconds the third stage will also start. So that is emergency calling facility. As we said, there can be a dedicated switch provided for this, button provided for this, or it can be incorporated in some other manner जो कि आगे आ सकता है, but indication is also given. No, not given here. Once emergency call button has been activated, all the alarms are going off. तो उसको रीसेट कर सकते हैं, वापस रीसेट बटन दबाएंगे तो all the calling will be cancelled and the system will come back to 00 once again. It will come to datum. Next is the reset function. So इसमें 4-5 points है reset functions में. Number 1,
Reset points should be available only in the areas from where normal navigation watch is carried out. It should be only in the bridge front area or bridge wings, जहां से हम lookout रखते हैं. The reset points should not be installed in remote areas like the radio room or the pantry area or even the chart room area. Why? Because if this is the bridge layout and this is the bridge front, यहाँ पे आपका chart table अगर है, तो we know that by night what we do, we close this area by curtain. So from here you can't be keeping watch. The bridge front is not visible. So reset point should only be in this area from where normal lookout is carried out or in the bridge wing area. No remote resetting. Number 2, reset का जो काम था वही हम बात कर रहे हैं लंबे सेंटेंस में. By a single action of the operator, the reset point should cancel out all the ongoing alarms and indications, and the system goes back to 00, that is datum, and starts new cycle of dormant period and subsequent alarms and indication. जो रीसेट पॉइंट का फंक्शन है, रीसेट बटन का फंक्शन है, वही इसको बात कर रहे हैं कि एक सिंगल एक्शन से ऐसा होना चाहिए. ऑल विजुअल अलार्म्स कैंसिल्ड, ऑडियो अलार्म्स कैंसिल्ड, सिस्टम सेट टू 00, बैक इन ऑपरेशन once again, new cycle of dormant period starts. Third, it should be protected against continuous activation. अगर रीसेट पॉइंट को हम जैसे स्मार्ट लोग हों और बोले कि यार बार बार जो करना पड़ता है ये कौन उठ उठ के करता रहेगा, ऐसा करते इसको टेप लगा देते. तो इफ वी हैड ऑन द बल्क हेड द रीसेट बटन, तो इसको कौन बार बार करेगा, तो इसको दबा करके और टेप लगा देते हैं इसके ऊपर. That means now it is pressed for long period. The first time when you are pressing it, it will come to 00 and the dormant period will start. 12 minute 9 minute जो भी है, it will start. Remember that it is in pressed condition. The dormant period will start, then there will be visual alarm, that is for 15 seconds. Then there will be first stage alarm and the second stage alarm, third stage alarm. Remember that it is in pressed condition. So it is protected against long activation. If you keep it pressed, once it will be reset, but after that, behind the dormant period will continue, subsequent alarms will continue as it is. So this protection is basically combined with another requirement. Long press का protection होना चाहिए, and there was another facility which was emergency calling. So this is combined, the two requirements, emergency calling and protection against long activation. So very often it can be combined together. That means if you have the reset point, single action, reset. Long press, it will go to emergency call. जैसे मोबाइल फोन में बटन होता है, सिंगल क्लिक कीजिए तो कुछ, लॉन्ग प्रेस कीजिए तो कुछ और एक्टिविटी, इनफैक्ट और उससे लंबा कीजिए तो तीसरी भी एक्टिविटी. So depending on the duration of the press of the button, different actions are done.
So same way it is also done. Short press, reset. Long press, emergency call. तो अब आप लॉन्ग प्रेस करने का सोच ही नहीं सकते. So both the functions are met in this condition. There was a mistake here in point number 5.4, which is basically the same thing as for 5.3 long press ka protection. So instead of this, we can write that the reset point should be easily accessible. Easily accessible. What is the meaning of easily accessible? There should be multiple points. Don't have to run from one side of the bridge to the other to reset it. There are multiple points, one step this side, one step that side, and there is a reset button handy. So it should be easily accessible. The last one is the reset of the Bnwas can be achieved by other devices or equipment which can register bridge activity. For example, you have, let us say, motion sensor. Is it a device that senses activity? Motion sensor? No. Of course it is. बहुत सारा वीडियो कैमरा होता है जो एक्शन को देख करके अगर कुछ हिलता है तो रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है, अदरवाइज रुका रहता है. मोशन सेंसर्स. So that is one kind of device. You know that when your mobile is, you are operating the mobile, तो screen उसका bright रहता है, चलता रहता है, but you leave it for some time, 30 seconds, 1 minute, जो भी setting है, then the screen goes blank. Why? Because it is not detecting any movement. So can we please identify some equipment which can register your activity? ऑटो पायलट पे पोस्टिंग करना था. अगर कोई हार्म आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर गेट रीसेट. Basically, radar yes. can It is register activity. basically yes. हाँ, तो ECDIS is a computer. उसमें आप बटन क्लिक करते रहते हैं, आप वे पॉइंट्स बना रहे हैं, आप कोर्सेज डाल रहे हैं, आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं. Whatever activity you are doing, the computer is registering your activity, and this activity is also being sent to the Bnwas. The Bnwas will keep on resetting. जैसे ही आपका क्लिक होगा यहाँ पे ECDIS पे, Bnwas रिसेट होगा. जैसे ही आप लाइन खींचेंगे वहां पर Bnwas reset होगा. Or it can also happen on the radar. But sometimes it should be understood only the movement of the cursor may not be considered as activity. बहुत बार जहाज की वाइब्रेशन से भी उसका जो माउस है वो हिलता रहता है, तो माउस से कर्सर थोड़ा बहुत हिल सकता है. So only click button और okay. So in the radar, when you are changing the VRM, you are changing the EBL, वगैरह वगैरह. If you are clicking some of the commands in the menu of the radar ARPA, all those things are considered as activities. Sometimes only the movement of the cursor is not considered activity, so that may be washed out. So the Bnwas is given an input from here, these devices, and when you are operating this, you don't have to run and press the button for resetting it. However, अभी हमने motion sensor की बात करी थी.
motion sensors are avoided. They are not so much approved by the surveyors. Why? Because आपने एक मोशन सेंसर लगा दिया है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से इसके सामने से आना जाना करते हैं तो इट विल डिटेक्ट। अब आपने क्या किया, तो एक पेपर लटका दिया है इसके सामने, पेपर हिल रहा है, इधर से उधर हो रहा है पेपर, और मोशन दिख रही है मोशन सेंसर को, तो रिसेट होता रहेगा। So these motion sensors are also not encouraged, rather they are given observations. We don't want this motion sensor. So दूसरे इक्विपमेंट ECDIS, ARPA radar is okay. किसी ने ऑटो पायलट में भी कहा था कि देयर इज सम काइंड ऑफ possibility of autopilot. How we can detect operator activity in case of autopilot system or steering system? Course change in autopilot. कोर्स चेंज इन ऑटो पायलट, मान लीजिए कोर्स ऑटो पायलट को हमने कोर्स चेंज मोड में डाल दिया, ऑटो पायलट हैज गिवन द आरओटी, आई मीन गिवन द हेल्म, ऑब्टेन द आरओटी, हाउ इज इट दैट इट इज डिटेक्टिंग वेदर वी आर डूइंग और द सिस्टम इज डूइंग बाय इटसेल्फ? नहीं सर, ट्रैक कंट्रोल में नहीं सर, हेडिंग कंट्रोल में अगर हेडिंग चेंज हो रहा है तो हम ही करेगा ना सर। हाँ, ये हो सकता है। अगर मैनुअल हम स्टीयरिंग कर रहे हैं तो मैनुअल स्टीयरिंग से वो डेफिनेटली हो सकता है। सर मैनुअल स्टीयरिंग नहीं, जैसे अगर नॉर्मल कोर्स किया है उसमें भी तो आई थिंक वो आइडेंटिफाई करेगा कि किसी ऑपरेटर ने किया होगा। कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है साथ आपके, आर यू रनिंग सम फैन और समथिंग वेरी क्लोज बाय? जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट। यस, लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग, सो आई डिफिकल्ट टू हियर। हाँ, अभी बैकग्राउंड नॉइज खत्म हो गया। ऑलराइट सर, गुड। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जैसे नॉर्मली तो अब तो खैर बहुत सारे मोड्स आ गए हैं इन ऑटो पायलट्स, लेकिन अगर नॉर्मल हेडिंग मोड पे ही रखते हैं एंड वी आर डूइंग, तो वो तो फिर ऑपरेटर के थ्रू ही होगा ना, तो वो भी एक मोशन के लिए वो भी एक ऑपरेटर्स एक्शन कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कर सकते हैं, लेकिन आप देखो, मान लो ऑल्ट्रेशन कोर्स कर दिया, आप कोर्स कीपिंग मोड में है, तब तो अब तो 300 किलोमीटर चलना है, 300 माइल चलना है उसी हेडिंग पे। यस सर। अब ऑटो पायलट अपना पोर्ट स्टार्बोर्ड कर रहा है, हेडिंग कंट्रोल कर रहा है, तो दैट मे नॉट बी कंसीडर्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज मशीन एक्टिविटी ना। यस सर। बट ऑल्टर नहीं सर, मतलब इंटरफेस जो है उसका, जो उसको कनेक्ट किया है बेसिकली, उस जो ऑटो पायलट का नॉब व्हील है या जिससे अभी हम सिलेक्ट कर मतलब कोर्स सेट कर रहे हैं, उस पे इंटरफेस दे दिया है कि व्हेनेवर वी आर एडजस्टिंग द कोर्स तो वो रीसेट हो जाएगा। ओके, अग्रीड, बट वो कितनी बार होगा? अगर आप मान लीजिए 4 घंटे की ड्यूटी में है तो कितनी बार आप करेंगे ये नॉर्मली? शायद एक बार भी ना करें। हो सकता है एक वो तो बार भी सर ना करें। बिल्कुल हम सही। 15 दिन तक नहीं करते। कहने का मतलब ये कि 4 घंटे में एक बार, एज अगेंस्ट हर 12 मिनट में एक बार रिसेट, डज नॉट मेक नहीं सेंस। नहीं सो सर, ऑटो पता है, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली दिस, मतलब इसमें भी इंटरफेस होता है सर। हाँ ठीक है, टेक्निकली पॉसिबल है, टेक्निकली वेरी मच पॉसिबल। वहां भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, अगर हमने कुछ चेंज किया तो वहां पे एक्टिविटी समझ में आ गई। हमने अगर मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज किया, ऑटो पायलट से रिसेट, हैंड स्टेयरिंग से ऑटो पायलट किया, तो भी सिग्नल चली जा सकती है कि हाँ भाई किसी ने ऑपरेट किया। अगर हमने कोर्स सेटिंग कंट्रोल चेंज किया तो भी सिग्नल जा सकती है। अगर हमने हैंड स्टीयरिंग में पोर्ट स्टार्बोर्ड किया तो भी जा सकती है। हेल्म को अगर हमने दिया, हेल्म दिया, तो भी जा सकती है। टेक्निकली यस, पॉसिबल। सो हो सकता है मल्टीपल इक्विपमेंट से दिया जाए। अब मैं स्टीयरिंग को ऑपरेट कर रहा हूं तो हो सकता है कि उस समय एक्डिस पे तो नहीं रहूंगा, जब एक्डिस पे जाऊंगा तो स्टीयरिंग पे नहीं रहूंगा। सो सब चीजों को मिला करके सभी का इंटरफेस दिया जा सकता है। टेक्निकली यस, इट इज पॉसिबल। कहने का मतलब ये कि रीसेट कैन बी डन बाय अदर इक्विपमेंट और डिवाइसेस which can register human activity, and that's it about the 5.5, the reset function, as we have discussed so far.
Next requirement is accuracy. Remember that we have said that there is dormant period indicated by TD. TD for dormant time. ये 12 मिनट का हो सकता है मैक्सिमम. Visual alarm can be for 15 seconds. Audio alarm, which is first stage alarm, can be 15 seconds. Second stage alarm can be for 90 seconds or 180 seconds, whatever the case may be. तो क्या कुछ प्लस माइनस अलाउड है या एकदम एटॉमिक क्लॉक से होना चाहिए इतने देर में? नो, प्लस माइनस इज अलाउड. These are recommended times, but it can go little bit up and down by plus or minus 5% or 5 seconds, whichever is less. All this time that we are talking about can be plus minus by an amount 5% or 5 seconds, whichever is less. Let us take the case of 90 seconds. What is 5% of 90 seconds? What is 5% of 90 seconds? Is it 4.5 seconds? 4.5. So now So you can 4.5. compare 4.5 and 5. Which one is less? Naturally 4.5. That means this can be plus minus 4.5 seconds. जो third stage alarm बजेगी after second stage alarm, that can happen anytime between 85.5 minutes to seconds. 85.5 seconds to 94.5 seconds कभी भी थर्ड स्टेज शुरू हो सकता है. अगर 12 मिनट की बात करें तो 5% ऑफ 12 मिनट is 36 seconds. So now we compare 36 seconds and 5 seconds. Which one is less? Of course 5 seconds. So dormant period के बाद जो visual alarm शुरू होगा, that can start anytime between 12 minutes plus minus 5 seconds. So that is the accuracy level that is required by Bnwas. Read the sentence, verify yourself that we are good with this. Yes, sir. Okay, so next one is security that we have already discussed. The keyhole, the password, which is only available to the authorized person or the master, and only he can operate the system. He can change the mode of operation, he can change the dormant period, he can change the sequence of backup officer कि किसके बाद किसके cabin में alarm जाएगा. All that can be done only by the authorized person. So he sets the system, switches the system on, takes the key in his pocket and goes to his cabin. So anybody on the bridge is not authorized or not allowed to operate the system. He should just follow whatever has been set. एक और point आप डाल ले सकते हैं, point number 8, not in the slide, which is malfunction alarm. Malfunction alarm. The system should be provided with this function. अगर power failure होती है तो या malfunction होता है system में तो there should be an alarm provided which should sound to indicate the malfunctioning of the system. So these are the
operational requirements of Bnwas. Functional requirement, the sequence of alarm, operational requirements, all these are requirements that we discussed, the 8 points. When it should be in operation, the modes of operation, emergency call facility, power supply requirement, reset functions, security, accuracy, malfunction. The carriage requirement. The system came into effect in 2006. Later on 2008 के बाद, later on 2008 के बाद, it started to get implemented. But as you are all aware, there is no one date which is provided for any kind of implementation, but there is an implementation plan. So certain kind of ships are given this much of time कि भाई आप इतने दिन में कर लो. Other kinds of ship are given time, आप इतने दिन में कर लो. So here we have an implementation plan. For smaller vessels, they should fit it early on 2011 तक. Other passenger ships, small or big, irrespective of size, but date built का criteria दिया इनको, built before 2011, should install it by 2012, 1st of July. We are talking history here, not future. 2011 आज 10 साल हो चुके उसको. Other kinds of ship, cargo ships, bigger ships, 3000 GRT and above, they are also given a time. They should be finished by so and so. Other ships between this and this, 500 GRT and 3000 GRT, given the time of 2013. And finally, 150 to 500 GRT, the smallest kind of ship, given maximum leverage, and they said you must install it by 1st of July 2014. So this is the last date when everybody should be ready with Bnwas installation. And it started with 150 GRT to all cargo vessels, all passenger vessels. So this is the final observation about carriage requirement of Bnwas. All passenger ships, irrespective of size, cargo ships of 150 GRT and above, all should be fitted with Bnwas. So this is the carriage requirement, which ships are required to carry or to be fitted with Bnwas. 150 GRT and above, all passenger ships, irrespective of size, cargo vessels, 150 GRT and above. So this is basically done with the Bnwas. लेकिन जाने के पहले एक चीज और पूछते हैं, व्हाट आर द डेविएशंस अलाउड. जो रिक्वायरमेंट पढ़ी, जितनी अभी हमने पढ़ी है, दीज वर ऑल रिक्वायरमेंट्स एज पर आईएमओ रिकमेंडेशन. मोड्स ऑफ ऑपरेशन, द सिक्योरिटी, द कॉल फैसिलिटी, एवरीथिंग वाज एज पर आईएमओ. बट is there any kind of deviations allowed? Yes, there are some deviations allowed, and here they are, the two deviations. Talking about the functional requirement, where we had the second stage alarm for 90 seconds only, it can be extended up to 180 seconds, that is 3 minutes.
if the ship is large, for larger vessels only, this facility is given that you can increase the second stage alarm to third stage alarm का time जो 90 seconds था, that can be increased up to 3 minutes maximum. We are saying large vessels. Which are the large vessels? Talk to the flag state. Flag administration says your ship is big, then your ship is big. If your flag administration says your ship is small, your ship is small. There is no criteria which is defined here in our documents which says large vessel, small vessel. So it is up to the purview of the flag state to give you go ahead for increasing the time or not increasing the time. Maximum that can be extended is up to 3 minutes. Other deviation which is allowed is for cargo vessels only, not for passenger vessels. Somebody's microphone is on, please. Can you check it? कोई बच्चा शोर कर रहा है पीछे? Okay, thank you. So only for cargo vessels. Why? Because we are all basically professionals in the cargo vessel. एक दो सुपरन्यूमरी हो गए तो हो गए, वो भी आधे स्टाफ ही हो जाते हैं जहाज के. So only in cargo vessels where there are only professionals available, the 3 stages of alarm can be made into one. Two. That means second and third stage alarm can be sounded together or they can be merged into one. That means फर्स्ट स्टेज अलार्म के बाद जब बात ब्रिज से बाहर निकली तो कैबिन में भी बज जाएगा और साथ साथ में एलिवेज में भी बज जाएगा. सेकेंड एंड थर्ड स्टेज अलार्म गोइंग ऑफ टुगेदर एट द सेम टाइम. Or it may also be possible, subject to approval by the flag state, that there is no second stage alarm. Cabin में alarm लगाया ही नहीं है. Only there is alarm in the alleyway. तो ब्रिज से निकलता है तो सीधा थर्ड स्टेज अलार्म बजता है कॉमन एरियाज में. So these are the 2 deviations allowed. Of course, we can put the third point here, which is about accuracy of the system. 5% or 5 seconds, whichever is less. So we can make this answer of this question. What deviations are allowed? 3 deviations are allowed. 90 seconds extended up to 180 seconds. Larger vessels, second and third stage alarm merged into one. All the times as stipulated, having a tolerance of plus minus 5 seconds or 5%, whichever is less. So these are some review questions for you, just to check out your understanding of the topic that we have discussed. If you are happy looking at this question and comfortable at this question, self review देखिए and verify yourself. If you are happy with this, no issues. Are we good? Yes, sir. Yes, sir. So with this, we are done with this topic. Next topic that we are going to pick up in our next class. In our next class will be EIS, Automatic Identification System. That will be our next topic when we get to the class. I have requested for 6 classes, so next week we are expecting to have 6 classes together. So इस 6 क्लास में
EIS होगा और उससे आगे